Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But last time we completed our fill in the blanks matter of the exercise. Now our next topic, that is the name the following. Question number C or name of question is name the following. Please look now. What is our answer number 1? The fastest mode of transmission of heat, answer is radiation. Okay. Second number, the degree of hotness or coldness of a body is measured by its temperature. Answer number 3, only liquid at room temperature in which conduction is possible, that is mercury. Radiation, temperature, mercury. Next number, answer number 4, 0 degree Celsius is the same temperature as 32 degree Fahrenheit. Okay. Next number, the Celsius scale was made by Anders Celsius. Anders Celsius. Okay. Next one, sea breeze and land breeze are the process called by convection currents. Convection current. Okay, this is convection current. Or next one, that is number 7, copper is a good conductor of heat and wood is bad conductor. That is bad conductor. Bad conductor. Okay, this is our answer. Or next number, calorie is the unit of measurement of, that is heat. Next number, the metal chair feel cool during winter. Okay, and the last one, mud houses are hot in winter. Your answer is only winter. इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी. और ये क्वेश्चन है बेटा आपका ट्रू फॉल्स. इसमें हम सीधा आंसर मार्क कर रहे हैं. देयर आर 5 क्वेश्चंस. फर्स्ट में लिखा बेटा, रेडिएशन हीट कैन इजीली पास थ्रू एयर. दिस स्टेटमेंट इज true. Second number, radiation is the fastest mode of transmission of heat. This is also true. Air is insulator. This is also true. The thermometer measure the heat energy in a body. Thermometer measure the heat energy in a body. False. It measures the temperature. 2 thin blanket are warmer than 1 thick blanket. This statement is also true. Now come on the next, that is the match the following. Match the following को थोड़ा ध्यान से समझना थोड़ा सा. इसमें हम ओनली क्वेश्चन बता रहे हैं आपको और उसके सामने आंसर आपको लिखना है. यहां पर देखना बेटा, फर्स्ट नंबर आपको कॉलम फर्स्ट दिया है और इधर है आपका कॉलम सेकंड. इधर नंबर लिखा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8.
इसमें प्लीज चेक योर आंसर। इसका आंसर होगा आपके पास डी, देन आफ्टर सेकेंड आंसर सी, देन बी, ए, एच, then after G, then E, and the last one that is F. ये इनका कंफर्म कर लेना। If any doubt, then confirm first and then correct them. This is the meter of match the following. Now, I want to tell you something about our next question. That is the find the odd one out. Give reason for your answer. मतलब आपको ये बताना है, सबसे पहले तो अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें बताना है कि आपका ओड वन कौन सा है और क्यों है, दोनों बातें बतानी है। So please look now. This is question number F. Find the odd one out. Find the odd one out and give reason. And give reason. Yes sir, this is your question. So we have only 4 question. फर्स्ट में आपका जो ओड वन होगा दैट इज वाटर। अब वाटर एड अलग ओड क्यों हुआ उसकी वजह है ऑल थ्री आर यूज्ड, ऑल थ्री आर यूज्ड एज फ्यूल, एज ए फ्यूल except water. सेकेंड नंबर इसमें होगा आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना। उसमें देखिए आप क्या लिखा है इसकी वजह, ये ओड वन क्यों है, ऑल थ्री आर मोड ऑफ, ऑल थ्री आर मोड ऑफ heat transfer of heat except expansion. Okay, now next number third, that is iron. देखिए इसमें all three are insulator of heat. All three are insulator of heat. Next number asbestos, number 4. Asbestos is the name of a substance that is metal like. एस्बेस्टस, इसमें देखिए बेटा क्या लिखा है, ऑल थ्री आर कंडक्टर ऑफ हीट, ऑल थ्री आर कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट एस्बेस्टस. In this way, our F question find odd one out is complete. Now our next question, that is the give reason. Give reason में अपने पास 3 questions हैं. First है आपका you are advised to use an umbrella when you go out in the sun. जब आप बाहर जाते हैं तो उस टाइम पर कुछ अम्ब्रेला वगैरह लेकर के निकलते हैं सनलाइट में, तो
ऐसा क्यों होता है वो देखिए। फर्स्ट वन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें आपका आंसर होगा टू सेव अस फ्रॉम, दैट इज द क्वेश्चन नंबर जी और आंसर नंबर फर्स्ट। टू सेव अस फ्रॉम heat energy, which comes from sun, which comes from sun by radiation. This is answer number 1 is complete. ये होगा आपका टू सेव अस फ्रॉम हीट एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। दिस इज ओनली आंसर, नॉट क्वेश्चन लैंग्वेज इन्वॉल्व इन दिस वन। और नेक्स्ट नंबर देखो बेटा, टू प्रिवेंट पासिंग ऑफ जर्म्स, passing of germs from one person to another, one person to another. Last one, that is answer number 3. इसको देखना, to prevent passing of germs from one person to another. Last one, that is the your question is in this way, thermometer is kept under the tongue. इसमें होगा because it shows average body temperature, average body temperature. So we keep the thermometer, we keep the thermometer under the tongue, under the tongue. Okay, please remember this is the main answer, temperature, or this is question language after this one, or question number 1 or 2 have only the answer language, no need to write question language. Okay, do complete it and thank you very much.